Students. Today our topic is the dangers of static charge. Right, so this one is pretty simple. There are many dangers of static charge, but the most commonly found danger in nature is the lightning or the thunder from the clouds, right? So there are basically four steps involved in the formation of the distribution of charge in the clouds, and then the formation of electric field and all that. So the first point is the low temperature turns the moisture into ice. In the clouds, जैसा कि हम जानते हैं कि clouds में बहुत सारा moisture होता है, especially the clouds which are going to rain. So in clouds में हमारे पास बहुत सारा moisture होता है, and due to these low temperatures, that moisture turns into ice. Those little tiny particles, that water droplets, transforms into ice, and during the motion of clouds, these icy particles rub together, building up electric charge all across the clouds. Right? So जब भी ये क्लाउड्स मूव करते हैं तो इनमें जो आइस पार्टिकल्स हैं, जो बेसिकली वाटर वेपर स्टेप आइस के तौर पर, so they will start to rub together. And what happens when we rub things together? The electric charge builds up on them. Okay, वहाँ पर electric charge build up हो जाएगा, and in turn the positive charge will reside on the upper surface of the clouds. Okay, positive charge ऊपर वाली सरफेस पर चला जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज जो है हमारे पास लोअर सरफेस पे आ जाएगा. राइट, जब नेगेटिव चार्ज लोअर सरफेस पे आएगा तो हमारे पास क्या होगा? जो ग्राउंड पर एटम्स होंगे, डेफिनेटली ग्राउंड मैटर से बना है एंड मैटर हैज़ चार्ज. यहाँ पर जो भी एटम्स होंगे ग्राउंड पे, उनके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे इन नेगेटिव चार्जेस की वजह से, इवेंचुअली क्रिएटिंग पॉजिटिव आयंस ऑन द ग्राउंड. ओके, सो ग्राउंड पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये चार्जेस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इतना ज़्यादा चार्ज होगा कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. राइट, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट this electric field यहाँ पर आप देख सकते हैं, positive charges reside on the upper portion and negative in the lower portion, causing positive charge on the ground to build up. Right, this electric field between negative portion of clouds and the ground is so strong that it causes dielectric breakdown of air. What is dielectric breakdown? ओके, जैसा हम जानते हैं एयर एक डाइलेक्ट्रिक है, या फिर हम कह सकते हैं इंसुलेटर है. बोथ आर द सेम थिंग्स. इंसुलेटर एंड द डाइलेक्ट्रिक आर द सेम थिंग्स. सो एयर एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर, बट इन केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब ये एयर एज एन इंसुलेटर नहीं, एज अ कंडक्टर काम करेगी, बिकॉज वो बैरियर जो एज इंसुलेटर एयर ने बनाया हुआ था, वो बैरियर क्रॉस कर जाएगी फील्ड. ओके, वो बैरियर ब्रेक हो जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम the lower portion of the clouds to the ground, just like this, causing electricity, causing the flow of electron, and eventually causing lightning, or what we call thunderstorm. Right, so this is how electrons transfer to the ground. Now जैसा कि हम लोगों के पास डेंजर्स है स्टैटिक चार्ज के, तो डेफिनेटली हमें इनकी सॉल्यूशंस भी चाहिए. ओके, हमें वो प्रिकॉशंस क्या होती हैं जिसकी वजह से हम इन डेंजर से बच सकते हैं. सपोज अ मैन स्टैंडिंग राइट ओवर हियर, एंड जब इसे पता लगता है कि लाइक थंडरस्टॉर्म आने वाला है, सो व्हाट डू मोस्ट ऑफ द पीपल डू? दे फाइंड शेल्टर. Mostly people just go underneath the tree and just wait by there. This is totally wrong way. Okay, because the tree is also just wet from the rain, and what happens, already गीला दरख्त हमारे पास एक conductor यूज होता है. Okay, this wood will conduct electricity, so whenever the lightning will
fall on the tree, it will conduct, and this man standing right beside the tree will get a shock. So, what exactly is the right way, the right place to hide? The right place to hide is somewhere where you can hide properly. Some conductor which is hollow from the inside. So, if you have a car, then you can just go and just sit inside that car, right? So, you might think that car is a conductor and that man will get a shock. But always remember that the electric field inside a conductor is zero. There is no electric field inside the conductor. All the charges would reside on the surface of the conductor. Okay, so in this case क्या होगा? चार्ज पास होगा, करंट पास होगा इस कार में से, बट वो कार के आउटर सरफेस से पास होगा. कार के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और इस पर्सन को कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा. सो दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू बी, राइट. सो एक डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने होम्स को, अपने रेजिडेंसीज को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, थंडर स्टॉर्म से बचाने के लिए बेसिकली. एंड दिस इज़ that device, just a rod which is connected to the ground. So what happens when electricity builds up over here and it tries to reach this house? So इस घर पर पहुंचने से पहले वो क्या करेगी, वो इस कंडक्टर पर अटैक करेगी, because iron is a better iron, or you can say any metal is a better conductor. So electrons will try to just pass through these conductor, and eventually it would just travel to the ground rather than just going to the house. Okay, so this rod will take all the electricity, all the thunder, and transfer it to the ground, and your home in that case stays safe. Okay, so these were some dangers, most important danger over here. Okay, the lightning and thunderstorms and the precautions we need to follow to avoid this kind of dangers. All right, so this was our today's topic. Thank you so much, everyone.